Welcome back. Let's continue with the articles. In the previous video, we discussed what definite and non-definite articles are and what is zero article. Let's apply all these things here and see where we use articles, where we don't use articles. I will read out these three sentences that I wrote on the board. Salim is a student. He studies in the 10th class. He goes to school by bus. Salim is a noun, a student, noun phrase. In the 10th class, again a noun phrase. School is noun, bus is noun. I used all the articles here. Non-definite and definite, and then you will see that article is not present at a couple of places. Hence we say that zero article is used. Why I haven't used any article with Salim? Because we know that we don't use any article with proper nouns. We don't use articles with proper nouns. You know that we use articles with common nouns. But there may be a case, sometimes what happens, कभी क्या होता है, ऐसा हम करते हैं that a proper noun is used in such a way that it's used as a common noun. Suppose I cite an example. अगर मैं ये बोलूँ that I compare Kashmir with Switzerland. Kashmir is proper noun, Switzerland is proper noun. लेकिन अगर मैं इसको compare करता हूँ और मैं बोलता हूँ that Kashmir is the Switzerland of Asia. कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया. मैंने कश्मीर के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने बोला द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया. इसका ये मतलब होता है दैट आई ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन कश्मीर एंड स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड की क्वालिटी के मुताबिक यहाँ पे बात हो रही है. व्हेन आई रेफर टू द क्वालिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, व्हाट इट्स नोन फॉर, व्हाट इट्स फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी. Green pastures, lofty mountains, all these things are found here in Kashmir. So we say that Kashmir is the Switzerland of Asia. Similarly, if you have a person who is good at writing poetry, जो अच्छी poetry लिखता है, but he has that Islamic bent of mind, हो सकता है कि religious bent of mind हो, और उसकी जो poetry है उसे छलकता है that he has that religious touch in his poetry. हमें पता है दैट देयर वाज अ पर्सन, हिज नेम इज़ इकबाल. इकबाल में यही चीज़ें थी. हम इस बंदे को, इस लड़के को, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इकबाल के साथ. इकबाल की शक्ल के साथ तो नहीं. व्हाट इकबाल वाज फेमस फॉर, व्हाट इकबाल वाज नोन फॉर, दैट पोइट्री, लिरिकल पोइट्री, म्यूजिकल पोइट्री, and that poetry with that religious touch in that, religious flavor in that. Similarly, we can say that this person is the Iqbal of our age. He is the Iqbal of our age. Or there is another example. If there is a person, if there is a boy or a girl, she or he is good at singing. बहुत अच्छा गाते हैं वो. हम किसी अच्छे सिंगर के साथ इसको कंपेयर करते हैं. We say that he is the Rafi of our age. He is the Kumar Sanu of our age. So we make the comparison. उस लिहाज से हम बोलते हैं that we use those articles. I used article the with proper nouns, but that proper noun remains no longer a proper noun. That's considered to be a common noun because there is a comparison that's made. So we can say that Kashmir is the Switzerland of Asia. Kashmir is the Switzerland of Asia. See, one more point is here. Kashmir is the Switzerland of Asia. What is Asia? It's a continent. यहाँ पे एक और बात निकल के आती है, continent. मैंने the Asia नहीं बोला, I said Asia और Asia, जो भी आप बोलना चाहते हैं. So I said that यहाँ पे आपको लगेगा पता that we don't use articles with names of continents. Africa, we don't say the Africa. We say Australia, not the Australia. See, I'm not talking about the names of countries. I'm talking about the names of continents. You have Asia, you have Africa, you have Australia, America. We don't use any articles with them. हम इनके साथ कोई article use नहीं करते हैं. हाँ, इसके against you have oceans. When you talk about oceans,
we always use the article the. I say the Pacific, the Pacific, the Pacific Ocean. I don't have to use the word ocean, ज़रूरी नहीं है. I can say the Pacific Ocean, the Mediterranean, the Red Sea, the Dead Sea. See, the Red Sea, seas. That means oceans and seas, they carry that article the with them. One important point that this THE, as far as pronunciation is concerned, it has two pronunciations, the and the. If you have a consonant sound after this THE, it is the Pacific, the Red Sea. But if you have a vowel sound, अगर आपके पास एक vowel sound है इसके बाद, then it becomes the earth. We say the sky, but the earth, the orange. So if you have that vowel sound, after that it is the. If you have consonant sound, it is the. This was about the pronunciation. Back to this. इस पे हम बात करते हैं. Salim is a student. Why a student? If you refer back, if you recall the last video, a student. There are many students and Salim is one of them. He studies in the 10th class. The 10th class. You have two things here. One is number. Another one is what we call that ordinal. Ordinal. Or another word for this number is cardinal. Sometimes we call it cardinal. 1, 2, 3, 4, 5. These are numbers. But first, second, third, fourth, next, following, previous, these are ordinals. This is, if I say 1, 2, 3, these are numbers. If I say first, second, third, next, fourth, following, these are ordinals. We always use ordinals. We always use this the with ordinals. Suppose I try to make this clear with this thing. इसको मैं clear करूँगा इस चीज़ से. अगर आपको बोला जाता है इसको आप पढ़िए, ये लिखा गया है कुछ यहाँ पे. What is this? World War I or World War the First. You cannot say World War First. No, वो गलत होगा पढ़ना. World War the First. The First World War. नहीं तो World War I. Unit 1 or Unit the First. Unit the Second. Similarly यहाँ पे he studies in class 10. He studies in class 10. 10, no article is used. But if I say that he studies in the 10th class, then I use this the with this ordinal. So this is about ordinal and those numbers or cardinals. Then come to this. He goes to school. I didn't use any article with school. This is very important as far as your exam is concerned or knowledge about grammar is concerned or usage about this article is concerned. This is very important here. He goes to school. I didn't use any article. School. What is school meant for? Studies. This can be replaced. This word can be replaced with this word. He goes to study by bus. क्यों जाता है स्कूल पढ़ने के लिए? Then this school refers to studies. जब इस स्कूल का मतलब निकलता है studies, तो इसका मतलब है that he goes to study. यहाँ पे याद रखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. थोड़े से मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे in order to make it more clear. Then you have hospital, you have church, or you have masjid for that matter, you have prison for that matter. See, these, if you look at these words, अगर आप इनकी तरफ देखेंगे, these are institutions. इनको institutions बोला जाता है. People come there and do something and leave the place. These are meant for something. ये किसी चीज़ के लिए बनाई गई है. स्कूल स्टडीज़ के लिए, कॉलेज स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के लिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, चर्च इबादत के लिए, प्रेयर के लिए, मस्जिद प्रेयर के लिए, प्रिजन पनिशमेंट के लिए. ये किसी चीज़ के लिए. दैट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनका कोई प्राइमरी पर्पस होता है, इनका कोई ऐसा पर्पस होता है जिसके लिए ये बनाए गए हैं. लेकिन ये एक एट द सेम टाइम यू माइट थिंक अबाउट देम एज बिल्डिंग्स. कभी कभी आप इनको एज बिल्डिंग की तरफ
तरीके से सोचते हैं। जैसे मैं किसी को बोलता हूं वो दुकान चर्च के पास है, दैट शॉप इज नियर द चर्च, दैट शॉप इज क्लोजर टू द चर्च। ये देखिए, वहां पे चर्च का मतलब प्रेयर नहीं है, वहां पे चर्च का मतलब निकलता है कोई बिल्डिंग। सपोज स्कूल के पास ही ग्राउंड है, स्कूल के पास ही ग्राउंड है, दैट मीन मैं बिल्डिंग का सोच रहा हूं। स्कूल के पास ही ग्राउंड है, ग्राउंड लोकेशन क्या है, वहां पे स्कूल है, दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू बिल्डिंग। इसका मतलब है प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही है। प्राइमरी पर्पस जब इसका मतलब निकलता है पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, इनका मतलब निकलता है पढ़ना पढ़ाना, इसका मतलब निकलता है ट्रीटमेंट। सपोज आई गिव एन एग्जांपल, अ पर्सन वाज इंजर्ड, एक बंदा जख्मी हो गया, एंड ही इज टेकन टू हॉस्पिटल, ही इज टेकन टू हॉस्पिटल, व्हाई? फॉर ट्रीटमेंट। यहां पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए यूज हुआ है। जब ये सारी चीजें फॉर प्राइमरी पर्पस यूज होती है, वी यूज जीरो आर्टिकल। हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? वी डोंट यूज एनी आर्टिकल when they refer to primary purpose. Suppose the Muslims go to masjid 5 times a day, the Muslims go to masjid, the Muslims go to pray 5 times a day. लेकिन किसी को मैं बोलूंगा मस्जिद के पास आ जाओ, मस्जिद के पास आ जाओ, मतलब है दैट आई एम गिविंग हिम सम लोकेशन। यहां पे बिल्डिंग मेरे जहन में है, यहां पे कोई स्ट्रक्चर मेरे जहन में है, सो ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, दिस इज सेकेंडरी पर्पस, वहां पे आर्टिकल लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ द लास्ट थिंग, he goes to school by bus. This is means of transport. Means of transport. अगर देखेंगे means of transport में से we have public transport and private transport. What is bus? Bus is public transport. इसका ये मतलब कोई भी इस पे चढ़ सकता है, ये किसी के लिए भी है। दिस इज नॉट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, किसी की अपनी नहीं होती है, जाती तौर अपने यूज के लिए नहीं होती है, दिस इज फॉर द पब्लिक। बस, ट्रेन, प्लेन, सपोज यू हैव बस, you have train, you have plane. अगर आप इन चीजों की बात करते हैं, और यहां पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है मैं आपको सीधा बता दूं, ये ट्रिक क्या है। अगर इससे पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन बाय, अगर बाय यूज हुआ है, वी यूज जीरो आर्टिकल। आई गो टू स्कूल बाय बस, he went to Delhi by train, he often goes abroad by plane. Yeah, he likes to travel by plane, he doesn't like to travel by train. So idea is this, that आप by यूज करते हैं, we don't use any article. But if it is, यहां पे इसकी जगह by नहीं तो on है, on है, तो यहां पे the लगेगा। जैसे मैं बताता हूं, there were many people on the bus. The bus, this is a particular bus that I am referring to. एक बस की मैं बात कर रहा हूं। I met the chief minister on the train, on the train। और ये भी याद रखिए, यहां पे प्रीपोजिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो इन नहीं लगता, वो ऑन लगता है। सो ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, दिस इज अबाउट दिस। सलीम, अ स्टूडेंट, द 10th, स्कूल, बस। आर्टिकल कहां पे यूज हुआ, आर्टिकल कहां पे यूज नहीं हुआ। होप यू अंडरस्टूड दिस मच। दिस विल बी कंटिन्यूड। ओके, थैंक यू।